Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the fifth chapter of class 4th subject science and the name of the chapter is respiratory and circulatory system. Dear students, we already know about structure of the human body organ systems and their functions, and about digestive system. In this video, we will learn about two organ systems, respiratory and circulatory system, organs of the respiratory system and its functions, and organs of the circulatory system and its functions, and how does the heart work. Respiratory system. Human beings breathe constantly. It is the respiratory system that help us in breathing. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्रीथ करने में. इट कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड lungs. Breathing is the process in which we take in air and then expel it out from the body. Have you ever tried to laugh while holding your breath? क्या आपने कभी भी हंसने की कोशिश करी है जब आप अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को होल्ड कर सको? इट्स इम्पॉसिबल. ये क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है. बिकॉज इन ऑर्डर टू लाफ यू नीड टू ब्रीथ. क्योंकि जब भी हम लाफिंग करते हैं हमें ब्रीथ की आवश्यकता होती है. ब्रीथिंग इज व्हेन you pull air into your body and then let it out. The part of our body that handles breathing is called the respiratory system. Your respiratory system allows you to do things like laugh, talk and sing. It's also necessary for you to live. The respiratory system brings oxygen into your body कॉल्ड इनहेलेशन. इनहेलेशन किसे कहते हैं? कि जब हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इनहेलेशन. एंड गेट्स रिड टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एक्सेलेशन. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर थ्रो करते हैं, निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन. योर सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ग्रो, वर्क एंड कीप योर बॉडी फंक्शनिंग. When cells do their jobs, they give off carbon dioxide. Carbon dioxide is harmful to your body and must be removed, which is what happens when you breathe out. Human respiratory system. Humans में respiration की process के लिए organs present होते हैं, जैसे nose, windpipe, lungs, diaphragm, etc. etc. Now first is nose. We breathe in air through nose. Next is trachea or windpipe. It takes this air down to the lungs in the chest region. Windpipe क्या करती है? ये जो एयर हम नोज के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं, ये है उस एयर को लंग्स तक पहुंचाती है. Now lungs. There are two lungs in our body. The lungs are soft, light, spongy and delicate organ. That exchange of gases takes place in lungs. Lungs क्या करते हैं? gases का exchange करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से थ्रो आउट करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं. lungs are protected by rib cage, जो कि rib cage द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं. Diaphragm. Diaphragm is a large shaped and dome shaped muscles
It support the lungs. How does respiratory system work? अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है? When we breathe in air, the lungs are filled with fresh air, oxygen. This oxygen reaches different body parts through blood. In return, the body parts give out carbon dioxide, which reaches the lungs through blood. The lungs expel this carbon dioxide in the air. We breathe out. हम हमारी बॉडी में एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं. यह ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड के लंग्स से ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक जाती है और रिटर्न में बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के थ्रू वापस लंग्स तक आती है, जो कि ब्रीथ आउट होती है. द सर्कुलेटरी सिस्टम. To stay alive, various materials like digested food, oxygen, and waste have to be carried from one part of our body to another. This transportation is done in our body by the circulatory system. ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, वो कौन करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है? Circulatory system. It consists of the blood vessels, and the heart. They together control the flow of blood in the body. This process is called circulation. Now, blood. Blood is a red liquid that flows around the body in blood vessels. It is a medium through which different substances like digested food, oxygen, carbon dioxide, etc. are transported throughout the body. Blood vessels. Blood flow across the body in tubes called blood vessels. ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. उनके थ्रू फ्लो करता है. देर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स. आर्टरीज. दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ऑफ द बॉडीज टिश्यूज. They branch into smaller and smaller arteries as they carry blood farther from the heart and into organs. Now, second is capillaries. These small blood vessels connect the arteries and the veins. ये arteries and veins को connect करती है. Their thin walls allow oxygen, nutrients, carbon dioxide, and other waste to pass to and from cells. Now, third is veins. These are blood vessels that take blood back to the heart. ये ब्लड कहाँ से लेती है? हार्ट से. They become larger as they get closer to the heart. The superior vena cava is the largest vein that brings blood from the head and arms to the heart, and the inferior vena cava brings blood from the abdomen and legs into the heart. The heart. The heart is a fist-sized organ in your chest. It is protected by the rib cage. Heart किससे प्रोटेक्ट रहता है? Rib cage से. It beats about 72 times a minute throughout your life. यह whole life 1 minute में 72 times beat करता है. It works like a pump. यह पंप के जैसे वर्क करता है to send blood through blood vessels. It makes the sound lub dub lub dub as it pumps blood to every part of the body. और यह हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड पंप करता है. The heart is divided into 4 chambers. हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड रहता है. अपर 2 chambers are the
auricles, the right auricle and the left auricle. And the lower two chambers are ventricles, the right ventricle and the left ventricle. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.